Today we will discuss the developing effective message. So look at the communication process is not as simple as it appears. It is affected by numerous aspects on the part of the sender as well as receivers. Therefore, the following aspects are important in developing effective messages. So, what are the aspects? There is thinking about the purpose, knowing the audience, structuring the message, as well as now the selecting proper channel, minimizing barrier, and the last one is facilitating feedback. Now, look at the organization should have a best communication network that will make it efficient in both internal communication and external communication. So there need some factor that make a message to develop. There need some aspects or factors to develop a message, communication message. The first one is thinking about the purpose. If a person wants to convey some ideas, information, or feeling to anyone, he has to think about the purpose for which he wants to share that particular information. Therefore, purpose plays a vital role to make an effective message, or to make a message effective. Here the sender has to think about the purpose. What is the purpose for which he wants to convey his message to the receiver? So first of all, he has to think about the purpose. What is his purpose? What is his purpose for which he wants to convey the particular message to the receiver? The purpose. So think about the purpose. So it is the one of the important factor to develop इफेक्टिव मैसेज. इसमें क्या इसमें है थिंकिंग अबाउट द पर्पस. इसमें है कि जो ऑडियंस, जो सेंडर है, जो मैसेज को सेंड कर रहा है, उसे पहले अपना पर्पस को दिमाग में रखना होगा कि कौन पर्पस, किस पर्पस के लिए वो अपना मैसेज को रिसीवर को सेंड कर रहा है. पर्पस, फॉर एग्जांपल if a person has seen a movie, for example, if a person has seen a movie or read a story, he may feel that he should share his pleasure or idea with his friends, sisters, or family members, whatever may be. He will tell his feeling or pleasure in a different way to each one. Okay, मतलब एक पर्सन से अगर कोई कुछ फिल्म, कुछ सिनेमा, कुछ स्टोरी, कोई नोवेल कुछ पढ़े और वो चाहता है कि उससे जो आइडिया आया, जो फीलिंग आया, उसे जो प्लेजर उसको अचीव हुआ, वो चाहता है कि उसको वो शेयर करे फ्रेंड के साथ, सिस्टर के साथ, फैमिली मेम्बर के साथ. तो उसके अकॉर्डिंगली उसे पहले अपना क्या होगा, अपना पर्पस सेट करना होगा. दोस्त के साथ किस पर्पस के लिए वो शेयर करे, सिस्टर को किस पर्पस के लिए वो शेयर करे. सो उसे पर्पस अलग अलग, ऑडियंस में अलग अलग पर्पस होगा. सो जिस ऑडियंस को वो देना चाहते हैं, इसलिए उसको पर्पस को ठीक करना होगा इसमें पहले, अबाउट द पर्पस. नाउ द नोइंग द ऑडियंस. द सेंडर शुड नो अबाउट द ऑडियंस टू होम ही इज गोइंग टू डिलीवर हिज और हर स्पीच, so that sender can structure his or her message according to the level of understanding, status, social background of the receiver. To achieve success in sending any communications, one must carefully think of the audience. So here the communication starts with a clear target audience in mind. So here the audience may be an individual or a group or a general public.
The target audience will tremendously affect the communicator's decisions, like what will be said, how it will be said, etc. So first of all, the sender has to know about the audience to whom he is going to deliver his speech. Without knowing that, he cannot be able to structure or be design his message. So if you know about the audience, he can structure, he can design his message according to the level of understanding of the receiver. यहाँ पे क्या होगा, ऑडियंस सेंडर को ऑडियंस के बारे में क्लियर नॉलेज होना चाहिए, जिसको वो अपना मैसेज देना चाहते हैं उसका आइडिया उसको होना चाहिए, उसका बैकग्राउंड क्या है, उसके स्ट्रक्चर, उसका स्टेटस क्या है, उसका लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग, उसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, तो उसके हिसाब से वो अपना नॉलेज, अपना मैसेज को बना सके। तो इसे जानना जरूरी है। सो इट इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फैक्टर for developing effective message. Now look, the structuring the message. So it is necessary for the sender to design or structure the message after knowing the purpose and audience. It is if the sender wants to convey orally, he or she has to structure the message in his or her mind and write in proper format if he wants to transmit in written format. So here the structuring message plays a vital role to develop an effective message. Here the sender has to design or structure the message according to the audience and its purpose. If he has known the audience, as well as if he has known the purpose, so he can easily structure his message according to the audience. So if he wants to convey his message orally, he has to keep in mind the structure in his mind, and if he wants to convey his message through written format, he has to structure the particular information in written format to convey to the receiver. So structured message यहाँ पे एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है मैसेज को डेवलप करने के लिए। अगर सेंडर ऑडियंस के बारे में क्लियर आइडिया उसको हो गया है, उसका पर्पस क्या है वो भी ठीक हो गया, अगर कर लिया वो पर्पस क्या है, क्यों उसको मैसेज देना चाहते हैं ऑडियंस को, और कौन सा ऑडियंस है, तो उसको मैसेज को उसको डिजाइन करना होगा उसके अकॉर्डिंग टू द फॉर्मेट। अगर वो रिटन फॉर्मेट भी देना होगा तो रिटन फॉर्मेट तैयार करना होगा, कौन सा कैसे उसको डिजाइन करे, कैसे बनाए, कौन सा इन्फॉर्मेशन कैसे दे, पहले कौन सा मीटिंग में कौन सा उसके फॉर्मेट को सजाना होगा। देन इफ ऑरली तो ऑरली में दिमाग में इसको इन्फॉर्मेशन रखना होगा, कौन सा इन्फॉर्मेशन पहले देगा, कौन सा मिडिल में, कौन सा लास्ट में। सो ही हैज़ टू डिजाइन हिज फॉर्मेट keeping in mind the audience as well as the purpose. So it's play a vital role to develop a particular message.